Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is Takvi loans. These are the type of the loans which are extended by government. Extended by government in order to encourage the agricultural production. In order to encourage agricultural production. और ये जो लोन्स होते थे इट वॉज स्पेसिफिकली ग्रांटेड टू टैकल damage of crops due to several reasons such as natural calamities other like the form of crisis like drought or flood और sometimes क्या होता था when one state go war with the another state जो उनकी आर्मी क्रॉस करती थी इन विलेजेस पे और इन एग्रीकल्चरल फील्ड से तो वो जो स्टैंडिंग क्रॉप होती थी उसको काफ़ी डैमेज होता था सो इन ऑर्डर टू टैकल ऑल दीज challenges or the damages of the crop these तकवी लोन्स आर ग्रांटेड और इन तकवी लोन्स में क्या किया जाता था तकवी लोन्स क्या है दीज आर द शॉर्ट टर्म लोन्स ठीक है ये शॉर्ट टर्म लोन्स हैं जो कि पुअर फार्मर्स को दिए जाते थे अब उनकी जब क्रॉप डैमेज हो गई है तो किस पर्पज से दिए जाएंगे ये पुअर फार्मर्स को दिए जाते थे इन ऑर्डर टू परचेज सीड आप फिर से सीड परचेज कर लें फर्टिलाइजर्स दिए जाते थे वेरियस इक्विपमेंट्स दिए जाते थे अलॉन्ग विद दी अदर एग्रीकल्चरल नेसेसिटीज जो भी उसकी ज़रूरत होती है वो सब प्रोवाइड की जाती थी पुअर फार्मर्स को ओके सो ये इंट्रोड्यूस हुए थे इन ऑर्डर टू इनहेंस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉप कल्टीवेशन एंड ऑल्सो हेल्प्स द पुअर फार्मर्स टू इंक्रीज द इनकम ठीक है तो इसका एंड गोल क्या होता था इनहेंस प्रोडक्टिविटी of agriculture or the crop cultivation and help poor farmer to increase their income even though ये जो scheme है it was majorly focused on improving the existing condition of the poor farmer जो उसकी existing condition है but to benefits it was broadly utilized by the rich farmers okay due to which जो ये स्कीम है ये समटाइम्स फेल भी हो जाती थी ये जो मेन उसका जो सर्व करने का जो था वो पुअर फार्मर्स का था लेकिन और मोस्टली क्या होता था उसका जो यूज़ करते थे वो रिच फार्मर्स काफ़ी यूटिलाइज कर पाते थे इस स्कीम्स को और उनको ज़्यादा फ़ायदा मिलता था इन कंपेयर टू देयर एंड द पुअर फार्मर्स ओके नाउ सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक वर द फर्स्ट Muhammad bin Tughlaq were the first to grant takwi or the crop loans to farmers. Later, when Firoz Shah Tughlaq came into power, he used to waive this loan. जितना भी लोन लिया था ड्यूरिंग द मोहम्मद बिन तुगलक के रेन में उन्होंने सारा वेव कर दिया इन ऑर्डर टू अपीज द पीजेंट्री और अपीज द लोअर सेक्शन ऑफ द पीपल ओके and it was not only in the medieval age it was also introduced by our government in the late 1950s and their goals and the objective are largely remains the same. Now let's see one question related to Takvi. What are the Takvi loans? A statement says that it was a long-term loan given to the rich farmers. B statement says that it was a short-term loan given to the poor farmers. C says that it was a short-term loan given to poor farmers during the natural calamities only. D says that it was a short-term loan given to the poor farmers during the damage of crops only. So in order to attempt this question please pause this video screen and write your answer in the comment section below. Here the most
means most close answer is the B. It was a short term loan given to the poor farmers. Okay, although D is very close, that it says that it was a short term loan given to the poor farmers during the damage of crop only. No, in basically, although it damages of the crop due to natural calamities or sometimes the flood or the wars, but there are the other possible condition as well in which this loan was granted. So here the most probable and the correct answer is B. So if you like this video, please do like, share and subscribe, and thank you very much for watching this. Have a good day.